Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear class, I hope you will be fine with the blessing of Allah. First of all, we read dua. वक़ुल रब्बी ज़िदनी इल्मा। तो डियर क्लास, आज हमारा लेसन नंबर 23 है और आज हम इसमें नई एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 4.3। और 4.3 में आज क्या करना है, आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नेम है क्वोशंट लॉ। क्वोशंट लॉ क्या है, इसको हम प्रोडक्ट लॉ यानी कि जो आपके सामने पीछे पेश किया मल्टीप्लिकेशन में, यानी कि जो मल्टीप्लिकेशन वाला लॉ था वो आपका प्रोडक्ट लॉ कहलाता है। और आज हम वो लॉ पढ़ेंगे जो डिवाइड से है। अगर क्वोशंट लॉ का नाम आए तो हमेशा याद रखें ये डिवाइड से मुतल्लिक है, तकसीम से मुतल्लिक है। और प्रोडक्ट लॉ का जब नेम आए तो हमेशा याद रखिए ये मल्टीप्लिकेशन से मुतल्लिक है। तो डियर क्लास, क्वोशंट लॉ क्या है, इसको कंपैरिजन किया गया है प्रोडक्ट लॉ के साथ और इस वीडियो के अंदर आप इसके मुकम्मल कंसेप्ट को समझने की कोशिश कीजिएगा। इसमें तमाम चीज़ें आपको बयान की गई हैं। तो लेट्स स्टार्ट, you see the video. Today's lesson is going to be on the quotient rule for exponents. Now, you might remember from our previous lesson that when you're multiplying two powers together and the bases are the same, then all you have to do is add the exponents. But what if we had a division instead of a multiplication sign right over here? Well, in this case, the two यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि पीछे जिस तरह मल्टीप्लिकेशन का साइन दिया था तो हमने उनकी पावर्स को क्या किया था, जमा किया था। और अगर मल्टीप्लिकेशन साइन की जगह अगर डिवीजन का साइन आ जाए तो फिर आप क्या करेंगे। तो देखिए क्लास, powers are being divided instead of being multiplied. And so instead of adding the exponents, all we have to do is subtract the two exponents. So let's actually take a look at a comparison between the product rule and the quotient rule. So remember, the product rule is saying that two powers with the same bases are being multiplied together, and that in this situation we can add the exponents. The quotient rule, on the other hand, is saying that when you have two powers, once again, with the same bases being divided, not multiplied, divided, then all you have to do is subtract the exponents. So in our previous video, we focused a lot on the two conditions that need to be met before using the product rule. In this video, we learned the quotient rule, and of course, the quotient rule also has two conditions. First condition is that you can only use it when the powers are being divided. The second condition is that the bases of the powers must be the same. So you can probably see a little bit of similarities between the two conditions for both the product rule and the quotient rule. Great, so let's try an example. Here we have 5 to the exponent 24 divided by 5 to the exponent 3. So we check our two conditions before we use the quotient rule. Here we see that the power क्वोशंट रूल को बेटा अप्लाई करने से पहले आपको जो पीछे दो कंडीशन बताई हैं वीडियो में वो आपने याद रखनी है। पहली क्या है, आर द पावर बीन डिवाइडेड, यानी कि जो पावर्स हैं वो दरमियान में क्या हो रही हों, डिवाइड हो रही हों। और दूसरी कंडीशन क्या है, उनकी जो बेसिस हैं वो क्या हों, सेम। तो डियर क्लास, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं। अब इसको कैसे हल करेंगे, लेट्स सी। powers are being divided as well. We see that the bases are the same. So in this situation, we can use the quotient rule. So we get 5 to the exponent 24 minus 3. And of course, that equals 5 to the exponent 21. So let's try another example. Here we have 12 to the exponent 7 divided by 12 to the exponent 5. So of course we have two powers that are being divided and they have the same basis. Therefore, we decide to subtract the exponents and we get 12 to the exponent 2. Now it's important to note that this is obviously not the most simplified form.
We weren't looking for the most simplified form all along, but if we were to simplify it more, it would be 12 times 12, which equals 144. Great. So ये हमारे सवाल का हिस्सा नहीं है, लेकिन वैसे आपको बताया है कि अगर इसको आंसर हमारा 12 की पावर 2 आ जाए, अगर इसको मज़ीद हल करना चाहें तो मतलब ये है कि 12 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो आंसर क्या आता है डियर क्लास? वेल डन क्लास, एक्सीलेंट, 144। it's pretty obvious that the quotient rule is not too difficult to understand. However, it is possible to make some errors when it comes to using the quotient rule at the wrong time. So for example, 12 to the exponent 7 minus 12 to the exponent 5 absolutely does not equal 12 to the exponent 7 minus 5. In other words, we can't use अक्सर ये भी समझा जाता है कि अगर दरमियान में माइनस आ जाए तो स्टूडेंट उसको भी माइनस कर देते हैं इस तरह से। हमेशा याद रखना है जो 2 कंडीशंस आपको बताई गई हैं, दरमियान में डिवाइड का साइन होना चाहिए, डिवाइड हो रही हों पावर्स, और जो बेसिस हैं वो दोनों सेम हो। अगर यहाँ पे प्लस या माइनस है तो उनको सब्ट्रैक्ट या प्लस नहीं करेंगे, इस तरह से ये बराबर नहीं होता, ये बताने की कोशिश की जा रही है। तो डियर क्लास इसको आप देखिए। तो डियर क्लास इसको देखिए मज़ीद आगे। And why? Because the powers are being subtracted here. They're not being divided, and that goes against the first condition that we reviewed in the beginning of the video. So of course, if they were being divided, then yes, it would be equal to 12 to the exponent 7 minus 5. But since you see that the powers are not being divided, they're being subtracted, then you cannot use the quotient rule in a situation like this. This is a very, very common mistake that some students tend to make. Awesome. So let's take a look at a situation where we have variables thrown into the powers. So in this situation, we have a to the exponent 7 divided by a to the exponent k. So let's check our 2 conditions. First condition says that if the powers are being divided, and as you can see, they are being divided. Second condition says if the powers have the same basis, and as you can see, a and a, that those are the same basis, then you can use the quotient rule. So this is simply the same as a to the exponent 7 minus k. Of course, we can't simplify 7 minus k any further, so we just leave it at that. Alright, so generally speaking, when you have x to the exponent a divided by x to the exponent b, so basically a number to the exponent of something divided by the same number to the exponent of something else, then you can do x to the exponent a minus b. तो डियर क्लास इस तरह से क्वेश्चन रूल आपको समझ आ चुका होगा उम्मीद है। और जो कॉमन मिस्टेक्स होती हैं या इनके दरमियान में अगर माइनस हो तो आप क्वेश्चन रूल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो डियर क्लास आज आप एक्सरसाइज 4.3 है उसका क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ पार्ट्स जो आपको डायरी में बताए जाएंगे वो आपने करने हैं। तो इसका पहला पार्ट है जो सा मैं आपके सामने परफॉर्म करता हूँ कि आपने नोटबुक पे कैसे करना है। सबसे पहले आप अपनी एक्सरसाइज लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे, उसकी हेडिंग देंगे सिंप्लीफाई, और इसके नीचे डबल लाइन लगा के इसको हाईलाइट करेंगे, और उसके बाद फिर आप पहला पार्ट लिखेंगे, और उसको लिखने के बाद आप सॉल्यूशन लिखेंगे नीचे लाइन छोड़ के। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन आपको दिया गया है वो दोबारा आपने लिखना है, और जैसे कि बताया कि 2 कंडीशन इस पे देखनी है। पहला कि दरमियान में डिवाइड है कि नहीं, दरमियान में डिवाइड है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई है। फिर अगली चेक करेंगे बेसिस सेम है, जी बेसिस भी सेम है, दोनों कंडीशन फॉलो कर रही हैं। अब हम इस पर क्वेश्चन रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो 2 वैसे ही तो बेस पावर्स माइनस हो जाएंगी अगर डिवाइड हो रही हों। तो 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 की पावर 5, इट्स आंसर। इससे फर्दर इसको सॉल्व नहीं करना, तो यहाँ तक ही है। तो डियर क्लास इस तरह से आपने अपनी वर्कशीट को भी करना है। और इसमें एक पार्ट देखिए पेज नंबर 28 पे आपने ये पहला पार्ट आपको दिया गया है
और 4 की पावर 8 है, डिवाइड 18 की पावर 8 है। तो ये देखिए क्लास डिवाइड हो रही है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई है। और दूसरी कंडीशन क्या है? वेरी गुड क्लास, बेसिस सेम होनी चाहिए, सेम नहीं है तो क्या करेंगे, इनकी पावर तो एक जैसी है, ये भी 8 है, ये भी 8 है। तो उसने यहाँ पे बता दिया अगर बेसिस सेम ना हो तो उनको क्या करना है, उनको सिंपली डिवाइड करके होल की पावर में लिख देना, क्योंकि उनकी पावर सेम है। जैसे यहाँ पे 4 की पावर 8 डिवाइड 18 की पावर 8 है, तो सॉरी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4/18, ये मैंने यहाँ पे 8 लिखता है, इसको मैं 18 करता हूँ। डियर स्टूडेंट, इस तरह से 4/18 होल की पावर 8 आ जाएगी। बाकी नीचे वाले पार्ट हैं, ये दरमियान में मल्टीप्लाई भी आ रहा है, तो मल्टीप्लाई प्रोडक्ट रूल है जो हमने पीछे पढ़ा, उसके मुताबिक आप इसको हल करेंगे। तो डियर क्लास, ये भी आपने मुकम्मल करना है। और 4.3 की एक्सरसाइज जो आज स्टार्ट की है उसके क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, उसके बाद 3 और 4 छोड़ देना है। फिर पार्ट नंबर 20 से लेके 8 तक आपने करना है, पार्ट नंबर 10 करेंगे, और पार्ट नंबर 12, यानी कि जो एक जैसे पार्ट हैं जैसे आज आपको करवाए उस तरह के आपने नोटबुक के ऊपर फर्दर करने हैं। तो डियर क्लास, ये आपकी डायरी है, इसको आपने अपनी डेली डायरी पे नोट करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, और आज का लेसन हमारा मुकम्मल हुआ। इंशाल्लाह आपको क्वेश्चन लॉ के बारे में जो मालूमात देनी थी और आपको जो समझाना था, उम्मीद है समझ आ गया होगा। और डियर क्लास, आज का लेसन हमारा मुकम्मल होता है। इंशाल्लाह नए लेसन में अपनी 4.3 एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।